Good morning, dear kids. We are taking chapter 9, exercise 9.4 about algebraic expressions. In that, today we will learn about multiplying binomials. Let's see. 9.4, problem number 1, we have 2x plus 5 and 4x minus 3. How you will multiply this? For that, take the first term and multiply with the entire second bracket. It will be 2x bracket 4x minus 3 plus 5. Take the second term and multiply with the entire next bracket, that is 4x minus 3. Let's open the bracket. 2x will be multiplied with 4x, that will be 8x square. 2x will also be multiplied with minus 3, that will be minus 6x, plus 5 into 4x, that will be 20x, minus 5 3s are 15. Correct? So your final answer is 8x square minus 6x plus 20x will be plus 14x minus 15. Is that clear? Shall we jump on to next then? I think next will be easy for you. Let's take problem number 3. Problem number 3 says 2.5 L minus 0.5 M and 2.5 L plus 0.5 M. My dear kids, you have an identity if you have same terms. Can you see 2.5 L here also? In both the brackets you can see? Yes, and 0.5 M here also and here also. And in between you have minus and plus. For that we have a wonderful identity, that is A minus B, A plus B will make up A square minus B square. Are you getting my point? So first term square minus second term square. So first term is 2.5 L, uska square, minus your second term is 0.5 M, uska square. What is 2.5 ka square? That is 6.25. L ka square will be L square. What is 0.5 ka square? That is 0.25, and M ka square is M square. So your final answer will be this. The kids who do not want to use this identity, they can go by direct method of what we have done in problem number 1. In that we did first term multiply with the entire bracket, that is 2.5 L multiply with 2.5 L plus 0.5 M. Second term, that is minus 0.5 M multiplied with 2.5 L plus 0.5 M. And now open it. 6.25 L square plus 2.5 L into 0.5 M will be 1.25 M. Minus 0.5 into 2.5 L will be 1.25 M, but in subtraction sign. And then you have minus plus minus 0.25 square. 0.5 into 0.5. So that will be 0.25 M square. So this is cut in between because they are in opposite sign, plus 1.25 M minus 1.25 M. So your final answer will be 6.25 L square minus 0.25 M square. So those who can use identity of A plus B, A minus B, that makes A square minus B square, well and good. Otherwise you can open up like this also. Shall we take one more? Can we go for sixth for this? Let's give a try for sixth. For sixth we have 3 upon 4 A square plus 3B square, and we have 4A square minus 2 upon 3B square. My dear kids, first you have to clarify this bracket. The first bracket you keep it as it is. The second bracket outside you have 4, so multiply with A square, that will be 4A square, and this 4 multiply with 2 upon 3B square. So that will become, your first bracket it is 3 upon 4A square plus 3B square as it is. Your second bracket is 4A square minus 4 2s are 8 upon 3B square.
Got my point clear? Now the same thing, that is first term of your first bracket, that is 3 upon 4a square, multiply with the entire second bracket, that is 4a square minus 8 upon 3b square, then plus 3b square, that is the second term, multiply with the entire bracket. Is the point clear? Let's open up now. How you will open? 3 upon 4a square multiply with 4a square, and 3 upon 4a square multiply with 8 upon 3b square. Now you can see, you can cut this. So it will be 3a square, that will be 3a4. मैं अभी तक सिर्फ ये पार्ट सॉल्व कर रही हूँ. Yes, here also now what you can do here, 4 ones are 4 twos are, and this 3 cut. So it will be minus 2a square b square. Correct? So for the first bracket which I have opened, you will get this one, 3a4 minus 2a square b square. Now you have to open the second bracket also. Shall I erase this first part? Second part, you have 3b square multiply with 4a square minus 8 upon 3b square. 3b square 4a square के साथ multiply करोगे तो you will get 12a square b square, and माइनस 3b स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करना है 8 अपॉन 3b स्क्वायर के साथ, तो 3 कट हो जाएगा. यू विल गेट 8b4, 12a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b4. सो द एंटायर आंसर, जो मैंने दो पार्ट में आपको स्प्लिट करके दिखाया, द एंटायर आंसर आई विल राइट इट. इट इज 3a4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर minus 8b4. So that is the final answer for your 6th problem. Got my point clear? Let's jump on to next. For next also we have to find the product. Product means multiplication. The concept will be same. आपको first bracket का first term लेना है और second bracket के साथ पूरा multiply करना है. Shall we directly start with the third? a square plus b फर्स्ट ब्रैकेट, a प्लस बी स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट. आप क्या करेंगे, a स्क्वायर पूरे a प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई प्लस b, ये वाला सेकेंड टर्म पूरे a प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई. मतलब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म उसको लेना है और दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है. फिर सेकेंड टर्म लेना है, दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है. इस तरीके से आपको ओपन करने पड़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, बी इंटू ए बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब. गॉट माई पॉइंट क्लियर माई डियर किड्स? सो योर फाइनल आंसर विल बी दिस. कैन आई ऑल्सो टेक विथ फोर्थ, that is p square minus q square in one bracket. Your second is 2p plus q. p square आपको मल्टीप्लाई करना है 2p plus q के साथ, फिर माइनस q square आपको मल्टीप्लाई करना है 2p plus q के साथ. ओपन करेंगे तो इट विल बी 2p क्यूब प्लस p square क्यूब माइनस 2p q square minus q cube. Why I am putting minus here? Because outside if I have minus and inside I have plus, so it will be minus plus, that makes minus. Got my point clear? Let's jump on to next. Your next is simplification. What do you mean by simplification? You have to open up the brackets and whatever constant terms are given to you, you have to utilize them also. I'll give for first x square minus 5 x plus 5 plus 25. My dear kids, how you will go for this? आप x स्क्वायर को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 25 को कुछ देर तक आप रख दो. लेट्स सी, x स्क्वायर x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू x 5x, minus plus 5 into 5, that will be minus 25.
और ये +25 जो आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पे पड़ा हुआ था। आप देखेंगे कि -25 एंड +25 आपका कट हो जा रहा है। व्हाट इज रिमेनिंग इज x³ + 5x² - 5x, and that's your final answer. Shall we jump on to next, that is third? Let's do third. t + s², t² - s. क्या करना है? t को t² - s के साथ प्लस s² को t² - s के साथ ओपन करो, t इंटू t² t³, s इंटू t st, s² इंटू t² s² t², plus minus s² into s will be s³. Got my point clear? So there is nothing much in this. Can we jump on to question number 4? Question number 4 we have a plus b c minus d plus a minus b c minus d plus 2ac plus bd. कैसे ओपन करेंगे किड्स? यू कैन टेक दिस, मल्टीप्लाई a c माइनस डी के साथ, b भी c माइनस डी के साथ, प्लस ये वाला a c माइनस डी के साथ, माइनस b c माइनस डी के साथ, और प्लस 2ac bd को हम ऐसे ही रखेंगे. लेट्स ओपन दिस. इट इज ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd प्लस AC माइनस AD माइनस BC प्लस BD प्लस 2AC प्लस 2BD. Let's see now. AC, AC. So you have 1 AC, 1 AC, 2 AC. That will make 4 AC. Minus AD plus BD. माइनस बी डी प्लस बी डी माइनस बी डी कट हो गया. दिस इज प्लस ए डी माइनस ए डी कट हो गया. प्लस बी सी माइनस बी सी कट हो गया. व्हाट इज रिमेनिंग? 4AC एंड हियर इट इज 2BD. 2BD आपका BD के साथ कट हो गया था. सो योर फाइनल आंसर विल बी 4AC. ये जो BD था, डिड यू नोटिस दैट BD और यहाँ पे BD था, माइनस BD प्लस BD माइनस BD वी हैव डन सम मिस्टेक हियर. यहाँ पे प्लस CD है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस CD ले लिया है. ओके तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस BD. सो माइनस BD माइनस 2BD एंड प्लस 2BD इस तरीके से कट हो जाएगा. सो यू विल नोटिस आपका आखिरी आंसर 4AC विल बी देयर. गॉट माई पॉइंट क्लियर? Shall we take one more then? We'll take for 6th x plus y x² minus xy plus y². x को पूरे x² माइनस xy प्लस y² के साथ, फिर y को पूरे x² माइनस xy प्लस y² के साथ. जिसमें कम टर्म्स हैं उसको ओपन करो. उसका फर्स्ट टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर उसका सेकेंड टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ. नाउ लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट. x² इंटू एक्स x³, xy इंटू एक्स दैट विल बी x²y, x इंटू y² विल बी xy², x² इंटू y विल बी x²y, y into xy will be xy², y² into y will be y³. Minus xy² minus x²y plus x²y cut plus xy² minus xy² cut. So your final answer is x³ plus y³. Correct? Next we have, can we take problem number 7 also? (1.5x minus 4y
1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y. Okay. You want to open it? प्लस 3 ब्रैकेट में ही लगाओ फिर. 1.5x इस पूरे ब्रैकेट के साथ. सो यू हैव 1.5x प्लस 4y प्लस 3. ये माइनस 4y आपको पूरे ब्रैकेट के साथ, दैट इज 1.5x प्लस 4y प्लस 3. And then you have minus 4.5x and minus plus minus 12y. I have opened the bracket. Now once you open this, my dear kids, let's see what we are getting. 1.5 into 1.5, that will be 2.25x square. 1.5 into 4y, that will be 1.5x plus into 4y, that will be 6xy. 1.5 into 3, that will be 4.5 with x. 4 into 1.5, that will be 6.0 with xy. Then 4y into 4y, that will be 16y square. Then 4y into 3, that will be 12y minus 4.5x minus 12y. Yes, my dear kids, let's see what we can get it. Minus xy, 6xy plus 6xy cut plus 4.5 minus 4.5 cut, and then I have, yes, okay, there is no bracket here and by mistake I have given a bracket here in the question itself. So the inside sign of 12y will not change, it will be plus 12y. So plus 12y minus 12y cut. So my final answer is 2.25x square minus 16y square. Correct? Okay dear kids, thank you.